My name's Francis. I am from Edinburgh in Scotland. सब्सक्राइब कीजिए द गो राइडर्स चैनल को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो अपडेट के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका दोस्त आपका होस्ट मैं शशांक शेखर सिंह आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों आज का जो ये व्लॉग है उन ट्रैवलर्स के लिए है जो सोलो ट्रैवल करते हैं, सोलो राइड करते हैं। तो अगर वो गोवा आ रहे हैं तो गोवा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, लेकिन मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए जो भी सोलो ट्रैवलर या सोलो राइडर आ रहे हैं उनके लिए। अब मेरे पीछे देख सकते हो जो हॉस्टल है इसका नाम है पापी चूलो। तो चलिए चल के दिखाते हैं कि कैसा है ये हॉस्टल और क्या क्या चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए लेट्स चेक आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। Hello, I'm Akshita and I manage Pappi Chulo Hostel. So if you are in Goa, you're most welcome. Price change होते रहते हैं. You can search it online. So you can find it on booking.com, Hostel World, Goa Vivo, or just call us directly. गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाल दूंगा नंबर पापी चूलो हॉस्टल का, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हो। सो गाइज ये है हमारा रूम, ये है हमारा डॉम और ये है 6 बेड मिक्स्ड डॉम और इसमें है मेरा बिस्तर यहाँ लगा हुआ। ये है आशियाना हमारा, पूरे गंदे तरीके से मेजअप कर रखा है मैंने बिकॉज सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं कैमरा के। और लुक एट द व्यू। सो इंटीरियर भी इन लोगों ने बहुत खूबसूरत बनाया, देख रहे हो सारे हॉलीवुड मूवीज़ के पोस्टर्स लगे हुए हैं। सही है, हॉस्टल सही है, नो डाउट हॉस्टल बहुत सही है। और ये है बाथरूम। और अगर आप चिल करना चाहते हो तो बाहर आपको मैंने दिखाया ही, यहाँ पे आपको बार भी है अवेलेबल। सो रूम से उठो, बेड से उठो, बाहर जाओ, चिल करो, नींद आए अंदर आओ, सो जाओ। My name's Francis. I am from Edinburgh in Scotland. I am travelling India with my friend. We have been to Delhi, which was fucking awful. And then we made our way south, so we went to Jaipur, which was amazing. We love Jaipur, met some really cool people. Really nice people there, so much nicer than Delhi. And then we went to Jodhpur and Udaipur, and then we're here in Goa. So we're here to go for a party. So it's been great so far. Get some sun, drinking some rum. It's been great. Yes, back there. Thank you. And that's that, yeah. Hi guys, I'm Karan Solanki from Pune. Staying here in this hostel from the past 3 days. Been an amazing experience here. Try it once whenever you come to Goa. Pappi Chulo, Ozran Beach. Pappi Chulo. And me what? Tell me. This is your small intro. Where you're from Finland. Visiting Goa for beach, chill, and beer. That's it. Hello, me Manu Veeran here in Goa second time. Living in hostel ever here for the first time. Pappi Chulo, awesome place, really funky. You should definitely try it. Thank you. Cheers. Pappi Chulo. Pappi Chulo. So guys, I'm out here for Ridermania 2019 and this is like what, 7th or 8th time that I'm here at Pappi Chulo's. Pappi Chulo is the place to be when you come to Vagator Hilltop. Very nice ambience, very good people around, you make new friends over here and overall it's a very good experience and that is what makes me come here again and again and again.
I'm Lakshman Bajpayee. मैं पुणे से हूँ. I'm 19 years old and मैं BA student हूँ. This place is great. मज़ा आ रहा है. Chill people. Yeah, it's great, man. सो गाइस, अभी तक आपने तारीफ सुनी. अब आपको मैं बताता हूँ पापी चूलो को 2-3 चीज़ें सही करनी ज़रूरी है. इनके डॉम में जो बेड्स हैं वो उसके स्क्रू जो है थोड़े से ढीले हो चुके हैं, जिसके कारण रात को सोने में प्रॉब्लम होता है. बिकॉज जो बंदा अगर हेवी बंदा अगर ऊपर सोया हुआ है तो बेड की आवाज़ आती है चों चाँ चों चों, तो वो रात को थोड़ा सा एनोइंग हो जाता है. एंड जो भी ट्रैवलर्स हैं, जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं जिनको हॉस्टल्स के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि गाइज अगर आप रूम के अंदर रहते हो तो प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि सबकी प्राइवेसी का थोड़ा सा ध्यान रखें. ऐसा बिल्कुल ना करें कि कोई बंदा सोया हुआ है और आप उठे और आप अपने दोस्तों से ज़ोर ज़ोर से बात करने लगे. मत कीजिए गाइस, मत कीजिए, क्योंकि हॉस्टल्स का लाइफ अलग होता है, ये होटल नहीं है. सो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इंडियन हो, देखो फॉरेनर्स को पता है कैसे रहना है हॉस्टल में, लेकिन हम इंडियंस को, बहुत सारे इंडियंस हैं जिनको नहीं पता होता है कि हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है. तो उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ गाइस, अंदर रहें तो शांति बनाए रखें, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें. नंबर दिया इसने, किसी लड़के का नंबर दे दिया. ग्रेट, लगता है पार्टी में कहाँ पे परिक्रमा बैंड यहाँ पे जीप नाइट है ना. मैं जाऊँगा. गोवा में कुछ लगा नहीं आने जाने में, बिना एक दिन क्या था. So we don't really deal with those people. Yeah, that's it. And everything We work within the bank, so we are like. मुझे भी नहीं मालूम था. मुझे दूर ना के रात को. That's so strange. Sorry? He's not open to learning this. That's so strange. He's open. Not like that. I'm listening. If you have noticed, if you haven't noticed, I'm trying to listen right now. I didn't know what she's talking about. I'm just learning from it. I'm just open. I'm open. But he doesn't work here right now. Who, me? You? No. सो यही था पापी चूलो का पूरा व्लॉग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाबा टेक केयर एंड जय हिंद. एंड प्लीज़ सेव गोल्ड चाइल्ड, प्लीज़.